Hello everyone, a very good evening to all of you. My name is Deepak. I am your academic director at Divine Classes, and today I will be sharing a study plan to clear HPAS Prelims in almost 60 days. I'm sure a question strike किया होगा. Is it possible? The answer is yes it is. और ये plan 100% काम करता है if you follow it. 60 days means approximately 9 weeks. और ये जो आपका प्लान है वो वीकली बेसिस पे आपकी कंसेप्ट्स क्लियर करेगा और आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा फॉर योर प्रीलिम्स. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट इज योर सिलेबस एंड सेकंड इज योर डेली प्लान. About 90% of the students fail because they are not able to follow these two things. Syllabus means आपको क्या पढ़ना है. स्टडी मटेरियल आपके पास बहुत है, बट एग्जाम में क्या आएगा यू नीड टू नो दैट. और वो हम कैसे पता करेंगे? अगेन वी नीड टू नो द टू वेज टू फाइंड दैट. फर्स्ट इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट 5 to 10 years क्वेश्चन पेपर्स विल टेल यू कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से सेगमेंट से आते हैं. Whether it is ancient, medieval or modern history, physical, human or Indian geography, static economics, economic survey or budget, etc., Indian polity or current events. You should know the smart way to study your syllabus. Secondly, along with your previous year's question papers, you should know your strength and weaknesses. इसका मतलब है अगर आपकी strength modern history में है, you try to solve as many as questions from modern history so that जब एग्जाम में क्वेश्चन उस पार्ट से आ रहा है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दैट करेक्टली. सिमिलरली अगर आपकी वीकनेस करंट अफेयर्स है, मेक श्योर आप जो भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो 100% हो, सो दैट एग्जाम में जब क्वेश्चन वहां से आए यू आर 100% श्योर अबाउट द आंसर. मेंटली ये आपको प्रिपेयर होके जाना है कि जो भी मैं अटेम्प्ट करूंगा वो 100% करेक्ट करूंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी नेगेटिव मार्किंग. ओके, सो नाउ जो हम बात कर रहे हैं अपने डेली प्लान की, हमारे जो अप्रोक्सीमेटली 9 वीक्स है या फिर हम कहें 60 डेज का जो स्टडी प्लान है, दैट इंक्लूड्स फर्स्ट द डेली स्टैटिक सब्जेक्ट रिवीजन. दैट कैन बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और इवन एनवायरमेंट. एनी 2 subjects डेली. सेकेंडली 3 days a week HPGK. Either you do it district wise or facts and figure as you wish to. Third thing is a daily current affairs. And I want that you do this current affairs in a MCQ form so that ये आपको पता रहे कि एक particular topic से क्या क्या questions बन सकते हैं. Fourth and the last one is weekly mock test. जितना भी आपने एक वीक में प्रिपेयर किया है उस सभी का रिवीजन थ्रू अ टेस्ट. Okay, we at Divine Classes have started a 60 days crash course for HPAS और हम इसी तरह से इसी प्लान को फॉलो करते हैं. In the very beginning when you register yourself, you will get a 60 days daily planner covering static subject, HPGK, updated current affairs, revision classes, doubt resolving sessions, weekly and mock test with aptitude exam preparation, that is CSAT paper 2, absolutely free.